Good morning, kids. In today's class, we are going to discuss about the JEE Mains PYQ 2024 FL shift. The chapter name is Alternating Current. Okay, this particular is a very simple chapter where some 7 or 8 formulas are there, and it will hardly takes for you 1 hour to revise this whole chapter. Then revise this, memorize the formulas, and solve at least 1 or 2 years PYQ. That'll be sufficient. Okay, fine. So we'll start with the first question. I have the, okay, let me read the question. A capacitor of reactance 4 root 3 ohm and a resistor of 4 ohm are connected in series with an AC source of peak value 8 root 2. The power dissipation in the circuit. Okay, I'll explain in Hindi also. बहुत सारे बच्चे सर हिंदी में भी पढ़ाओ थोड़ा बहुत उनको इजी हो जाएगा बोल रहे थे. फिर सर सो इसमें क्या है कि लाइक आपको ये आरसी सर्क्यूट है लाइक. सो फर्स्ट यहाँ पे हम कैपेसिटर सर्किट ड्रॉ करेंगे. दिस इज कैपेसिटर, दिस रजिस्टर, रजिस्टर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है. इसको हम सीरीज में अक्रॉस एसी सोर्स में कनेक्ट कर रहे हैं. सीरीज मींस करंट विल बी सेम करंट हैज टू फ्लो. देन दिस सच इस ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलते हैं. सर सीरीज बोले तो क्या है? करंट रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, वही करंट यहाँ पे फ्लो होता है. मीन्स लाइक सर what do you mean by like a series? फिर थोड़ा कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे करंट का जितना भी मैग्नीट्यूड है, फेज एंगल है, उसी मैग्नीट्यूड उसी फेज एंगल अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टर में रहे तो देन रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वी शुड कॉल देम एज सीरीज. ओके फाइन. इसका पीक वोल्टेज कितना है? Vm गिवन 8 रूट 2. इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू कितना दिया है? 4 रूट 3 ओम. और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना? 4 ओम. यहाँ पे हम इम्पिडेंस पहले फाइंड आउट करेंगे. इम्पिडेंस का सर्क्यूट, इम्पिडेंस ऑफ सर्क्यूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. आर स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर ए 4 रूट 3 होल स्क्वायर. ये 16 होगा, 16 into 3. So this will be 16 plus 48 रूट 64. ए होगा आपका टोटल 8 ओम. ये तो इम्पिडेंस हो गया सर्क्यूट का. देन वी आर एम एस, वी एम यहाँ पे पीक वोल्टेज कितना है? 8 रूट 2 वोल्ट, 8 रूट 2 वोल्ट है. वी आर एम एस वैल्यू, वी आर एम एस वैल्यू यहाँ पे हमको पीक बाय रूट 2. वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट 2. पीक वैल्यू कितना दिया है? 8 रूट 2. सो 8 रूट 2 बाई रूट 2 विल बी 8 वोल्ट. ये होगा आपका वी आर एम एस. देन अगर आप ओम्स लॉ सर्क्यूट को लगाए तो यहाँ पे आपको वी आर एम एस विल बिकम इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड. वी आर एम एस कितना हुआ? 8. आई आर एम एस हमें पता नहीं, सो दैट वी आर कैलकुलेटिंग. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं. इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इसका 8 हुआ. सो आई आर एम एस करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर. और यहाँ पे एसी सर्क्यूट में सो कौन सा वो एलिमेंट है जो पावर डिसिपेट करता है? यहाँ एक आपको रेजिस्टर मिल रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिख रहा है. इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पावर डिसिपेट करता है? मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके इट विल कन्वर्ट इनटू हीट. ये तो कैपेसिटर स्टोरिंग एलिमेंट हुआ. ये तो डिसिपेशन, डिसिपेशन मीन्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू हीट. तो जो यहाँ पे हमारा सर्क्यूट में जो सर्क्यूट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से लेके उसको हीट में कन्वर्ट है, उसको हम डिसिपेटिव एलिमेंट बोलते हैं. और जो
एनर्जी यहाँ से लेके दोबारा फिर सोर्स को देते हैं, उसको हम स्टोरिंग एलिमेंट देते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट बोलते हैं इधर। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो जो भी यहाँ पे डिसिपेट करता है वो ओनली रजिस्टर, सो विल राइट वन ओनली रजिस्टर dissipates power. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन बोल रहा है, जब भी आपको पावर डिसिपेशन बोल रहा है तो इट्स एवरेज ओनली, एसी में इट्स ए डिफॉल्ट। एवरेज पावर डिसिपेटेड इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। और सर बाकी कुछ एनी अदर फॉर्मूलास आते हैं? यस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। अगर आपको वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव पता है तो यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपको IRMS into R पता है, use this particular formula. Or if you are having VRMS square by R, use this formula. ये जो different formulas है, everything will be same. अगर आपको VRMS and R पता है, use this formula. अगर आपको VRMS, IRMS, cos phi पता है, use this formula. अगर आपको IRMS and R पता है, use this formula. तो we know IRMS. Then what is the power dissipation? Power dissipation यहाँ पे 1 into 4 will be 4 watt. Okay, so like a VRMS, क्या हम यहाँ पे VRMS पता है, ऐसा लगे VRMS कितने 8 वोल्ट है, तो इसको लगाओ यहाँ पे 8 स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कितना 4। ओके ठीक ठीक, ओके दिस VRMS स्क्वायर बाय आर, नो दिस इज VR, सॉरी, यहाँ पे आपको VR स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ पे आपको ड्रॉप फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका ड्रॉप अगर पता है तो सब्स्टिट्यूट विल गेट द सेम आंसर। अगर कॉस फाइव पावर फैक्टर के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। So all these things, formulas are useful to calculate the power dissipation based on the information available. Fine. So your answer will be, यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा? 4 होगा. Okay, fine. So we'll take the next problem. Next problem ले लेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि alternating current EMF 110 root 2 sin 100t volt is applied to a capacitor. The RMS value of current. So I think it's like a यहाँ पे problem pure like a capacitor connected across pure AC signal. This is the capacitor. इसका XC वैल्यू पता नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट। और यहाँ पे आपको AC सोर्स है, इसका ये तो पीक वैल्यू है एंड ये तो ओमेगा है। सो इसका VRMS कितना निकलेगा? VRMS इज इक्वल टू 100 रूट 2 बाई रूट 2। इसका तो RMS वैल्यू हो गया 100 वोल्ट। ओमेगा वैल्यू कितना है? 100, 100 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसका XC वैल्यू, कैपेसिटेंस C वैल्यू कितना दिया है? 2 माइक्रोफैरेड। RMS वैल्यू करंट कितना? IRMS करंट फ्लो हो रहा है। देन इफ यू अप्लाई द ओम्स लॉ across the capacitor, it should be VC equal to IRMS into XC। और दिस ये दोनों पैरेलल में है। तो सीधा जितना भी ड्रॉप कैपेसिटर के पास है वही ड्रॉप अक्रॉस AC सोर्स में। These two are parallel, like we can say these two are parallel. Okay, now this should be equal to यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे VRMS, VC इक्वल टू VRMS। अलग से लिख देता हूँ। So this should be equal to 100। IRMS वैल्यू अननोन थिंग, वही कैलकुलेट करना है हमें, और XC वैल्यू पता नहीं। So this should be equal to ओमेगा C।
ओमेगा वैल्यू यहाँ पे आपको 100 और कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶। सो IRMS वैल्यू होगा आपका इतना 2 × 10⁻⁴, सो 2 × 10⁻⁻², और इसका 20 मिली एम्पियर कर देंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं 110 है, 100 ले चुका हूँ। तो दिस, ये तो 110 हो गया, दिस भी 110, यहाँ पे आपको 110 ये हो गया। लेट मी फिर एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल बी 22 × 10⁻³ एम्पियर और 22 मिली एम्पियर। ओके सर, ये लाइक व्हाट डू मीन बाय ये रिएक्टेंस बोले तो क्या है? व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द रिएक्टेंस? ये क्या है कि इट विल मेक करंट टू लीड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। करंट को वोल्टेज से 90 डिग्री आगे बढ़ाता है। इट विल ऐड फेज, इट विल मेक द करंट टू लीड द वोल्टेज। ओके सर, लीड बोले तो इसे क्या, इसका क्या मतलब है? मीन्स अगर आप साइनोसोडियल वोल्टेज कर्व इफ ड्रॉ कर लिए तो आईआरएमएस का कितना, इट लीड्स बाय 90 डिग्री। सो ये हो गया आपका करंट, और दिस वन ये हो गया आपका वोल्टेज। ओके फाइन, दिस इज द टाइम। जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज मिनिमम रहेगा, और जब करंट मिनिमम है तब वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा। दिस वॉट द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंस। So in capacitive reactance, current will lead the voltage. XC will make IC to lead VC by 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है बोले तो, लाइक जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज जीरो रहेगा, जब करंट डिक्रीज होते रहता हो रहा है तब तब वोल्टेज इंक्रीज होते रहता है। दैट हैपेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अब जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट जीरो रहेगा। सर हाउ इट इज पॉसिबल सर, वोल्टेज जीरो करंट, दिस इज at any instant of time when the current is decreasing the voltage will be increasing. This particular condition is what we say current leads the voltage by 90 degree across the capacitor, and this is what the reactance will do. Are you getting now? And it will not dissipate power. Capacitor, very clearly we'll write it here. Capacitor will not dissipate power. मीनिंग बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैपेसिटर है ना, सो इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम द सोर्स और रिटर्न कर देता है। दिस व्हाट मींस, व्हाट इज द कैपेसिटर? इट विल स्टोरिंग एलिमेंट। कैपेसिटर क्या करता है कि जस्ट स्टोर एलिमेंट। ओके सर, लाइक ये ले रहा है और फिर बाकी रिटर्न दे रहा है, इससे इससे क्या यूज है यहाँ पे? आप यहाँ देख रहे हैं तो, it will make the current to lead the voltage, and I can by varying this frequency मैं यहाँ इसका एक करंट है ना, इसका वैल्यू भी कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यहाँ पे हम अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो वी कैन कंट्रोल दिस आईआरएमएस, और बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस वी कैन कंट्रोल द आईआरएमएस। मीन्स यहाँ पे हमको करंट कंट्रोल करने का वी हैव बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वेरी करने से यहाँ पे करंट इन सर्किट में चेंज हो रहा है, और कैपेसिटेंस चेंज करने पे यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है। एंड वन मोर थिंग इज लाइक करंट एंड वोल्टेज का एक रिलेशनशिप भी हम बना रहे हैं, लाइक ए करंट लीड्स द वोल्टेज। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल विद द
capacitor. Okay, fine. So we'll take the next problem. A coil of negligible resistance is connected in series with 90 ohm resistor across 120 ohm, 6 volt supply. A voltmeter reads 36 volt across resistance, inductance of the coil. So what is this problem? AC supply. So ये तो सर्किट हो गया आपका RL सर्किट. यहाँ पे हम इंडक्टर लगाएंगे एक इन सीरीज. यहाँ पे आपको रजिस्टर है कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स. इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप है? 120 वोल्ट आरएमएस वैल्यू और 60 इयर्स सप्लाई वोल्टेज. ये तो वीआरएमएस हुआ और ये तो फ्रीक्वेंसी दे दिए है. ये वोल्टमीटर रीड्स 36 वोल्ट अक्रॉस द रजिस्टर. अगर यहाँ पे आप वोल्टमीटर कनेक्ट करें तो वोल्टमीटर कितना रीड कर रहा है? 36 वोल्ट. एंड दे आर सीरीज. अगर सीरीज में क्या क्या होता है? सीरीज करंट विल बी सेम. सो यहाँ पे फेजर डायग्राम डाल देंगे. अक्रॉस द इंडक्टर करंट लैग्स द वोल्टेज. अक्रॉस द रजिस्टर करंट एंड वोल्टेज दोनों इन फेज में रहते हैं. वी आर एंड दिस इज VRMS और ये IRMS. अगेन वंस अगेन सीरीज बोले तो क्या है? सेलेक्टेड करंट का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल अक्रॉस रजिस्टर में और इंडक्टर में सेम रहता है. then such a combination what we'll call they're in series. Inductance of the coil. So हमको क्या पूछ रहा है कि लकी इसका L वैल्यू कितना है? तो पहले हम क्या करेंगे लकी इसका VL लगा देंगे और इसको VR बोलते हैं. फेजर डायग्राम डाल देंगे. सो ए हुआ IRMS. इसका जीरो फेज है. VL और A VR एंड दिस इज VRMS. अगर वोल्टेज जब वोल्टेज ट्रायंगल इसका कंप्लीट कर देंगे so this will be VR, AVL and this is VRMS. This will be phase angle. So one simple AC circuit. वोल्टेजेस का वेक्टर सम ऑफ वोल्टेजेस हम करते हैं. डीसी में क्या है कि अलजेब्रिक सम. द ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज बाय द सोर्स. यहाँ पे क्या है कि एसी सोर्स में द अप्लाइड वोल्टेज वेक्टर सम ऑफ वोल्टेजेस करते हैं हम. बिकॉज यहाँ के हम वोल्टेज को एक वेक्टर जैसे ट्रीट करते हैं. इन एसी सर्क्यूट इन सीरीज एसी सर्क्यूट we'll write down like this. In series AC circuit, voltages are treated as a vector. Vector मानी फेजर बोल दीजिए. टेक्निकल इसको हम फेजर बोलते हैं. फेजर बोले तो भी ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज हो जाता है. वेक्टर बोले तो सर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इस वोल्टेज. अगर आप तुम ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ले लो इसका मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन 90 डिग्री है. अगर आप करंट ले लो इसका मैग्नीट्यूड है 0 डिग्री एंगल है. अगर आप अप्लाइड वोल्टेज ले लो इसका मैग्नीट्यूड है और इसका सम फेज एंगल भी है. अगर ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ले लो इसका एक मैग्नीट्यूड है 0 फेज एंगल है. तो इस तरह से क्या हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लेके एसी सर्क्यूट में ट्रीट वोल्टेजेस एज वेक्टर्स. वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी रहता है. फाइन. तो विल यहाँ पे हम वेक्टर सम ऑफ वोल्टेजेस कर लेंगे. VRMS स्क्वायर इक्वल टू VRMS स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर. VRMS में कितना दिया? 120 वोल्ट.
120 स्क्वायर, वीआर का कितना ड्रॉप है? 36, 36 स्क्वायर वीएल स्क्वायर 120, let me calculate, 120 स्क्वायर 1400, 36 स्क्वायर का 36 स्क्वायर तो 1296, 144000 माइनस 1296, 13104, इसका रूट ले लेंगे, रूट ऑफ 13104, करीब करीब अराउंड 114.47, और 5 कर देंगे इसको, इसका वोल्टेज हो गया। देन across the resistor will apply the ohms law लगा देंगे, VRMS इक्वल टू IRMS। VRS कितना? 36, IRMS वैल्यू पता नहीं है, R का वैल्यू कितना? 36, सो IRMS कितना हुआ ना? 1 एम्पियर। अक्रॉस इंडक्टर ओम्स लॉ लगा देंगे, सो यहाँ पे VL इक्वल टू IRMS इंटू XL, XL मीन्स ओमेगा L, ये तो ओम्स लॉ अक्रॉस इंडक्टर हुआ, सो VL का वैल्यू कितना? 14.5, और IRMS का वैल्यू 1, ओमेगा ओमेगा का वैल्यू 2 पाई f इंटू L, 114.5, 2 इंटू 3.14 इंटू L, इसका 114,114.5, 114.5 डिवाइड बाई 6.28, 18.23 आ रहा है। 90 ओम रेजिस्टेंस, 90 ओम रेजिस्टेंस, ओके ओके, थोड़ा थोड़ा लाइक आई थिंक रॉन्ग वैल्यू ले चुका हूं मैं। 90 IRMS का कितना हुआ? 36 बाई 90, 6 बाई 50 ना, सिक्स डिवाइड बाई 15, 0.4, इसका वैल्यू 0.4 हो। ओके सर, सम कैलकुलेशन मिस्टेक, दिस इज 0.4। 2 पाई f का वैल्यू कितना है? f का 60 है, I'll substitute here, 114.5, IRMS वैल्यू 0.4, 2 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 इंटू L, दिस, सो कैलकुलेट करने के बाद 0.67 एम्पी। यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। RL सर्क्यूट, सर RL सर्क्यूट इसका दूसरा एक नाम भी दे चुके हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैग सर्क्यूट। यहाँ पे आपको अप्लाइड वोल्टेज, द करंट, अप्लाइड करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज। Ohm's law across, Ohm's law across resistor, VRMS, VR equal to IRMS into R. Ohm's law across inductor, VL equal to IRMS into XL. Across inductor, current lags the voltage. Across resistor, current and voltage in phase. And vector sum of voltages. Complete आपको RL सर्क्यूट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ओके फाइन, एंड वेक्टर सम ऑफ वोल्टेजेस यहाँ पे हम लेते हैं। इन AC सीरीज AC सर्क्यूट, वोल्टेजेस मस्ट बी ट्रीटेड लाइक ए वेक्टर। तो एक वोल्टेज को आप एक वेक्टर तरह मान लीजिए,
वोल्टेज का एक मैग्नीट्यूड रहता है और एक डायरेक्शन। वोल्टेज का एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वोल्टेज यहाँ पे लुक एट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है वी आर है, फेज एंगल कितना, 0। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इसका मैग्नीट्यूड वी एल है, 114.4, और इसका एंगल कितना है, फेज एंगल 90 डिग्री। अप्लाइड वोल्टेज का, इसका मैग्नीट्यूड वी आर एम एस 120 वोल्ट, इसका फेज एंगल कितना है, 5। तो यहाँ पे वी आर ट्रीटिंग वोल्टेजेस एज लाइक a vectors. Okay, fine. So this will be our answer. अगला क्वेश्चन ले लेंगे। An LCR circuit is at resonance for a capacitor C inductor. Now the value of resistance is all keeping all other parameters. The current amplitude at resonance will be now directly AC circuit, inductor, capacitor, or a resistor. This is the AC source. R, C, R, C, L. Current यहाँ पे सेम रहेगा। The current amplitude at resonance. At resonance, the drop across inductor capacitor will be equal. जो भी यहाँ पे current flow हो रहा है, that will be due to applied voltage VRMS and resistance. यहाँ पे XL will become equal to XC. VL minus VC will be 0. Okay, I'll write the equation. यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। VL will be IRMS. IRMS VC, यहाँ पे आपको VR एंड IRMS। ये तो फेजर डायग्राम हुआ। अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लैग्स करंट, एंड वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज अक्रॉस रेजिस्टर। ओके, वंस अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का। अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट, अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स करंट, अक्रॉस रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ये सभी हम फेजर डायग्राम में डाल देंगे। तो दिस विल बी VL, इसका मैग्नीट्यूड VL है, फेज एंगल 90 डिग्री। VR, इसका मैग्नीट्यूड VR है, फेज एंगल 0। VC, इसका मैग्नीट्यूड VC है, फेज एंगल -90। अप्लाइड वोल्टेज करीब करीब VRMS, लेट इट भी यहाँ पे ले लेंगे, एंड IRMS मैग्नीट्यूड IRMS, इसका फेज एंगल 0 है। तो यहाँ पे हम जब वोल्टेज ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे, दिस विल बी VR, ये तो आपको VL, VRMS. So we'll apply the VRMS square equal to VR square plus VL minus VC whole square. Ohm's law across the circuit. Current amplitude at resonance बोल रहे, at resonance what will happen, XL is equal to XC. IRMS into that. Ohm's law for the circuit, Ohm's law for resistor, IRMS into R. Ohm's law across inductor, IRMS into XL, IRMS into XC. IRMS will get cancelled out, Z square equal to R XL minus XC. At resonance condition, at resonance XL and XC इन दोनों का impedance equal रहेगा। तो therefore at resonance value कितना रहेगा now, Z equal to R. Okay, fine. तो यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टर के वजह से ही फ्लो होता है। Agreed? So then we'll apply the IRMS value. यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, IRMS इक्वल टू VRMS by R. यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसका हम आधा, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू R/2 होगा तब करंट का वैल्यू कितना होगा, तो ये VRMS R/2, न्यू करंट का वैल्यू पूछ रहे हैं।
इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ? एम्पलीट्यूड मीन्स इज आस्किंग द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू मीन्स Im by root 2 2 into इसका Im by root 2. सो इसका पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना हुआ? ये तो डबल हो गया. It'll become double. Okay, fine. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. For a given series LCR circuit, it is found that maximum current is drawn when the value of variable capacitance is 25 nanofarad. If resistance is 200 is being used in a given circuit, the frequency of AC source. Series LCR circuit. Maximum current is drawn. When current will be maximum? At resonance. Directly resonance का circuit ले लो. Inductor, capacitor, and this is resistor. यहाँ पे कंडीशंस क्या दे रहे हैं कि करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, दिस विल बी मैक्सिमम. एट मैक्सिमम व्हाट इज द कंडीशन? XL इक्वल टू XC. At resonance there is a condition, and this will be the current. Resonance frequency, this will be the maximum current. At resonance this current versus frequency graph इस तरह वेरी हो रहा है. That one, as frequency increases, current through the circuit will increase. At resonance frequency current जो फ्लो हो रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू रहता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है. देन करंट विल बिकम मैक्सिमम. अगर फर्दर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे सोर्स का, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका इंक्रीज करेंगे? सोर्स का. देन फर्दर इंक्रीज करेंगे, करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है. नो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स. यहाँ पे हमको 100 milliampere, this one. So any formula for resonant frequency? F naught equal to 1 by 2 pi under root of LC. This what resonant frequency है. This resonance frequency का वैल्यू पूछ रहे हैं. 1 by 2 pi root of L value. L value कितना है? 100 into 10 to power of minus 3. Capacitance का वैल्यू 25 into 10 to power of minus 9. Simplify कर दो. The frequency of AC source. So this should be equal to, simplify कर देंगे. यहाँ से आपको 10 बार निकलेगा. 100 का रूट 10 है, 25 का रूट 5 है, 10 to power of minus 12, this will be 10 to power of minus 6. 10 to power of 5, 10 to power of 5, 2 pi into 5. 2 into 5, 8, 10 होगा. So 10 to power of 4 by pi. 10,000 by 3.14. 10 to power of 3 में एक्सप्रेस करना है. 10 into, okay, इसका वैल्यू पाई रख देंगे, will be better. Okay, fine. This will be 10 into 10 to power of 3. This is pi. So pi square का वैल्यू will be कितना होगा आपको? 10. The frequency of AC source पूछ रहे हैं. $100 milliampere, 25, 10 to power of 4, 10 into 10 to power of 3. Pi का वैल्यू 3.3. Yeah. Okay, fine. Calculations एक बार चेक कर लो. Just at resonance, what is the resonance frequency formula? This is the formula. Next question ले लेंगे.
When a DC voltage 100 is applied across inductor, current 5 ampere flows to it. When an AC voltage is connected to inductor, its inductive reactance is to be the power dissipated in the circuit पूछ रहे हैं. कौन सा भी इंडक्टर ले लो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R रहेगा. सर रेजिस्टेंस क्यों है? बिकॉज इंडक्टर का कैसे बनाए थे हम, एक एक मेटल वायर ले लो, मेटल वायर लेके आपके अंगूठे ऊपर आप घुमा दो उसको, देन वही मेटल वायर इट विल बिकम एन इंडक्टर. और कौन सा भी इंडक्टर रहने दो, एक मेटल वायर से बनता है ना, तो हर एक मेटल वायर चीज का, हर एक मेटल का एक रेजिस्टेंस रहता है, तो दैट विल बिकम रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर. तो पहले क्या है कि इसको हम डीसी सोर्स कनेक्ट करेंगे, 100 वोल्ट डीसी कनेक्ट करें, कितना 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इससे क्या हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, 100 इज इक्वल टू 5 इंटू आर, R equal to 20 ohm. This is the internal resistance of inductor. Okay, fine. तो इसी सर्क्यूट को, इसी इंडक्टर को एसी सोर्स को लगा देंगे, एसी सोर्स कनेक्ट कर देंगे. 2 वोल्ट पीक वैल्यू, 200 वोल्ट पीक वैल्यू मीन्स 200/√2. इसका पीक वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट है, तो इसका आरएमएस कितना होगा, आरएमएस विल बिकम Vm/√2, 2n/√2. इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज फाउंड टू बी, इसका एक्सेल वैल्यू दे दिए है. कितना एक्सेल वैल्यू, एक्सेल वैल्यू इज 20√3. देन पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पूछ रहे हैं. यहाँ पे आप कौन कौन डिसिपेट पावर करता है, जो रेजिस्टेंस इंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिसिपेट पावर करता है. फाइन. सो वी इसका हम रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है हमें कितना है, लगे 20 ओम. नो, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पूछ रहे हैं, तो इसके, लेकिन इसके लिए हमें आईआरएमएस चाहिए. आईआरएमएस के लिए तो वी नो वीआरएमएस, हमें एक्सेल पता है, हमें आर भी पता है, तो इसका हम इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे पहले. इम्पिडेंस इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एक्सएल का वैल्यू कितना है, 20√3 होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 स्क्वायर. 20 तो बाहर आ गए, 20 स्क्वायर, ये तो 3 + 1 4, और दिस विल बिकम 20 इंटू 2 40 ओम. आरएमएस वैल्यू कितना लगाए हम, 200√2. तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे फॉर सर्क्यूट. वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू जेड, जेड मीन्स इम्पिडेंस. वीआरएमएस का वैल्यू कितना है, 200√2. आईआरएमएस वैल्यू, इम्पिडेंस कितना है, 48, 0. सो आईआरएमएस का वैल्यू होगा, ये हो गया कितना, 50/√2, 50/√2 और 25√2 एम्पियर. यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, पावर डिसिपेटेड इन द सर्क्यूट. पावर डिसिपेट, कौन डिसिपेट पावर करता है, ओनली दिस रजिस्टर ओनली. So then power dissipated in the circuit should be equal to IRMS square into R. IRMS का वैल्यू कितना है, 25√2 होल स्क्वायर. R का वैल्यू कितना है, 28. So 625 into 2 into 20. IRMS value of 5/√2. एक जीरो कैंसल हुआ यहाँ पे, या 5/√2, इसका तो 5/√2 है, तो इसका 5/√2
कितना और कैलकुलेशन देखेंगे 25/2 इंटू 20 250 वैट ओके सर लाइक cos 5 पावर फैक्टर इसका दूसरा कौन सा फॉर्मूला है VRMS IRMS cos 5 ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं cos 5 बोले तो पावर फैक्टर मेनी अप्रोचेस है वही फॉर्मूलास जो 7-8 फॉर्मूलास है वही फॉर्मूलास हम यहाँ पे लगा रहे हैं एवरेज पावर डिसिपेटेड IRMS स्क्वायर अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पता है यू कैन आल्सो राइट VRMS स्क्वायर बाय लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम हम करे थे ना वही मेथड वैसे भी कर सकते हैं हम पर सर एग्जाम में इतना सब कुछ डिटेल में नो नो यू हैव टू डू कैलकुलेशन हाई स्पीड कैलकुलेशन इम्पिडेंस कैलकुलेट करो इम्पिडेंस से करंट कैलकुलेट करो करंट से दिस वन और से लेके व्हाट इज द प्रॉब्लम इज अगर ये फॉर्मूला ले रहे अगेन अगेन आपको पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पावर फैक्टर विल बी R by Z पावर फैक्टर सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर इसका तो R by Z है अगेन वन मोर कैलकुलेशन हो गया ना सो इट इज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला तो विल डिसिपेट पावर यहाँ पे पावर कौन डिसिपेट करता है ओनली इंडक्टर ओनली रेजिस्टर ये रेजिस्टर कहाँ से आया जो इंडक्टर हम बनाते हैं एक मेटल वायर से बनाते हैं सो जो मेटल वायर का वो रेजिस्टेंस है वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर हो गया यहाँ पे अगेन वंस अगेन इंडक्टर ऐसा एलिमेंट है जो पावर डिसिपेट नहीं कर सकता है कौन करता है यहाँ पे पावर डिसिपेशन ओनली रेजिस्टर इंडक्टर व्हाट इज द रोल ऑफ इंडक्टर सर लाइक इट विल ओनली कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इट इज अ स्टोरिंग एलिमेंट या रेजिस्टर which will dissipate the power now we take the next problem okay please like share and subscribe our channel okay we'll take the next question we have two statements in LCR series circuit current is maximum at resonance I think a to ठीक है ना so this will be inductor capacitor a resistor ये जो है this is AC source ग्राफ इसका ग्राफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ एट रेजोनेंस इसका करंट मैक्सिमम है ओके फाइन कौन सा करंट आइदर पीक करंट और आरएमएस करंट current in a purely resistive circuit can never be less than that in a series LCR circuit when connected to same voltage source. Can never be less than. What is the meaning of purely resistive circuit? Means दूसरा सर्किट डाल देंगे यहाँ पे रेजिस्टर और एसी सोर्स है प्योर एसी सोर्स सेम सोर्स पे हम कनेक्ट कर रहे हैं देन व्हाट इज द करंट यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो आईआरएमएस इसका आईआरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिस आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस बाय आर इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी ये जो करंट फ्लो हो रहा है दिस आल्सो इक्वल टू वीआरएमएस बाय आर ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर लो ना when connected to same voltage source so both statements correct है ना current in purely resistive can never be less than that in a LCR circuit when connected to same voltage source so we'll take this statement ये LCR series circuit है ये pure resistive circuit है at resonance XL equal to SC जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज होंगे या प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आई थिंक बोथ इक्वेशंस आर सेम so therefore both statements are correct we'll take the next question An LCR series circuit is subject to an AC signal of 200 volt 50 years if the voltage across the inductor is then the current in the circuit
LCR सर्क्यूट, सो डेफिनेटली तीनों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इंडक्टर, कैपेसिटर और ए रजिस्टर, तीनों यहाँ पे हम सीरीज में लगा देंगे अक्रॉस एसी सोर्स। एसी सोर्स का आरएमएस वैल्यू 250 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर का वैल्यू कितना है 10 मिली एम्पीयर। यहाँ पे वोल्टेज हमें दे चुके हैं, यहाँ पे दे दिए, दिया है 31.4 वोल्ट। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, करंट, करंट कितना फ्लो हो रहा है। सर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, डायरेक्टली व्हाट इज आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आरएमएस करंट कितना फ्लो हो रहा है अक्रॉस कैपेसिटर का वोल्टेज पता है हमें, पता नहीं, ड्रॉप अक्रॉस पता है, अक्रॉस रेशर पता नहीं, हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि 200 वोल्ट, यहाँ पे 31.4 वोल्ट एंड इसका 10 मिली हेनरी एंड एक फ्रीक्वेंसी दे चुके हैं। ओम्स लॉ अक्रॉस ईच एलिमेंट यहाँ पे लगा देंगे हम, अक्रॉस इंडक्टर ओम्स लॉ, आईआरएमएस एक्सी, वीएल का वैल्यू कितना है 31.4, आईआरएमएस वैल्यू ये अननोन है, इसको फाइंड आउट करना है, एक्सएल वैल्यू कितना है ओमेगा एल 31.4, आईआरएमएस ए जो अननोन है, ओमेगा इसको हम क्या करते हैं 2 पाई एफ एल, 2 इंटू 3.14, एल का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻3, सॉल्व इट, 31.4 31.4, okay, we'll get it, 2 pi fl, देखो, so it's asking current in the circuit, करंट कितना फ्लो है, सो दिस विल बी 10 मिली एम्पियर। ओमेगा एल एल वैल्यू 31.4, 31.4 10 एक कैंसिल हो जाएगा, आईआरएमएस का वैल्यू कितना हुआ नो 10⁻³ 1000 बाई, थोड़ा गड़बड़ है, दे दे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का कितना वैल्यू है 31.4, अक्रॉस इंडक्टर ओमेगा, ओमेगा वैल्यू नहीं दे चुके हैं, यहाँ पे आपको 50 फ्रीक्वेंसी, सो 10⁻³ बाई 2 5 जा 10, यहाँ पे आपको 100 10 एम्पियर या 50। सर वोल्टेज सर ऐसे ही थोड़ा कैपेसिटर के बारे में बोलो, ओके, अक्रॉस ओम से अक्रॉस कैपेसिटर विल बी आईआरएमएस इनटू एक्सी, एंड एक्सी वैल्यू क्या है, एक्सी वैल्यू इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, वोल्टेज ओम्स लॉ अक्रॉस resistor VRMS equal to IRMS into R. Ohm's law for the total circuit VRMS equal to IRMS into Z. And what is Z? Z impedance हो गया R square equal to XL minus XC whole square. Fine. एक बार रिवाइज करो, इसी वेरी वेरी इजी है, जस्ट एक बार एक 2 घंटे पढ़ लो तुम बस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बाद में फॉर्मुलास, देन प्रॉब्लम सॉल्व करो, ओके फाइन गुड, कोई सा भी प्रॉब्लम ले लो, यू कैन मैनेज। We'll take the next question. An AC source is connected in given RLC. Okay, circuit दे चुके हैं. The RMS potential difference across the capacitor is asking to calculate the RMS value across the capacitor. इसका यहाँ पे हम VC वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। okay, यहाँ पे हो गया VR, इसका ड्रॉप हुआ VL, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वी हैव टू फाइंड आउट। पीक वैल्यू दे चुके हैं, ओमेगा वैल्यू, सो इसका VRMS ले लेंगे,
50√2/√2 50 वोल्ट। ओमेगा वैल्यू कितना हुआ 100। ओके फाइन, इसका एक्सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्सी वैल्यू 1/ω/c 100। c का वैल्यू 20 into 10⁻⁻⁶। दिस विल बी 10⁻⁶ by 2 into 10⁻3 1000/2 500 ohm। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइक आईआरएमएस चाहिए। आईआरएमएस कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बोले तो विल गो फॉर इम्पिडेंस, R² + XL - XC होल स्क्वायर। many methods are there। R² का 300²। XL वैल्यू इसका कितना, ओमेगा वैल्यू ओमेगा इंटू एल वैल्यू 100। एक्सी का वैल्यू कितना है 500। यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके ना एक्सी का वैल्यू, तो सभी लगा देंगे। दिस विल बिकम 300², 400²। यहाँ पे तो आपको 50 ओम। यहाँ पे आपके तो 100 कॉमन, 100 का रूट 100 10 बाकी 3² और 16², 9 16 कितना रूट 25 हो चुका है। सो दिस विल बिकम 10√25। दिस विल बिकम 50 ओम। तो इम्पीडेंस, सर्किट का इम्पीडेंस कितना है 50 ओम। नाउ यहाँ पे हम आईआरएमएस कैलकुलेट करेंगे। आईआरएमएस इक्वल टू वीआरएमएस बाय जेड। वीआरएमएस का कितना 50, जेड इज 50, आईआरएमएस कितना 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आईआरएमएस करंट फ्लो हो रहा है। Then we'll apply the Ohm's law across capacitor. VC is equal to IRMS into XC। IRMS का कितना 1, XC का वैल्यू 500 या 50। 20 माइक्रोफैरेड। XC का वैल्यू 500 है। IRMS वैल्यू, वीआरएमएस कितना 50 जेड वैल्यू कितना, इम्पीडेंस का वैल्यू एक बार लेट मी एक बार चेक कर लेंगे। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा वैल्यू कितना 100 400 यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, देखेंगे। यहाँ पे तो आपको 100 बार आ रहा है, 100 बार आता है यहाँ पे। 100 यहाँ पे आपको 500। सो इसका कितना हुआ 0.1 हुआ, 0.1 इतना भी बहुत ओके। 0.1 into 500 will be 50 volt। Similarly, voltage drop across inductor IRMS XL 0.1 into ओमेगा एल आपको फाइंड आउट करना है। ओमेगा एल कितना 100, 10 वोल्ट। ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर IRMS into R 0.1 into 300 volt। Okay, done? Huh? So yeah, so these are the some simple questions what they asked in the JEE Mains APL shift। और तरह क्वेश्चन है लेकिन चूज द, यहाँ पे मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2
choose the correct of answer from the following given options. यहाँ पे match list 1, we have to match with the list 2. ओके, फर्स्ट यहाँ पे जनरेट करेंगे, बाद में किक चेक कर लेंगे. across capacitor circuit, current leads the voltage. Fine. Across capacitor circuit, current leads the voltage, so A will be 1. Across purely inductive circuit, current lags the voltage, B का हुआ 4. Phasor diagram. Pure inductive, LCR series circuit at resonance, voltage and current will be in phase. LCR series circuit, voltage can lead current, and at resonance this can happen. At resonance is telling, at resonance only voltage and current will be in phase. And in general LCR series circuit, voltage can lead the current or voltage can lag the current. So we can go for D as option 3. Okay, fine. यहाँ पे key matching है. So he's asking phasor diagram across. So this little bit confusion, sir. Like यहाँ पे आप sir like how you justify, sir, like AB series circuit है, AB series circuit. At resonance पूछा है. At resonance, voltage and current will be in phase. In LCR series circuit, not at resonance. It's not at resonance. तो कंडीशन कुछ रेजोनेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है ना. सो देन वोल्टेज कैन लीड द करंट और वोल्टेज कैन लैग द करंट. सो दिस ऑप्शन वी कैन पिक अप. One more last question. So this all we are discussing the phase shift. Please like, share, subscribe our channel. Okay, now the alternating current at any instant is given by the RMS value of this current. This is the DC voltage and this is the AC voltage. We have to calculate the effective value of this. This will be, अगर आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्टली यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला पता नहीं रहे तो देन यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड. इज आस्किंग टू गेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस. IRMS square equal to I square dt by integral dt 0 to t. Rate t equal to 2 pi by omega. Agreed? So this you'll square it. A plus b sine omega t plus pi by 3. This will be whole square. dt 0 to t, and this will be t. So first we will expand this using a plus b whole square formula, then expanding, then squaring, then integrating, substituting limits will get the answer. Already conceptually you should have learned. जब आपका टीचर पढ़ा रहे सब समझ, दिस द कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे थे. इसका एंड फॉर्मूला विल कंक्लूड IRMS is equal to a square b by root 2 whole square. a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 6 है, 6 स्क्वायर. b का वैल्यू कितना है √56 by root 2 whole square. So this will become IRMS is equal to 36, 56 by 2 will be 28. So this everything will become 64. This will be 8. Okay, sir. ये इक्वेशन कहाँ से आप फॉर्मूला लेके आए? This one only will expand. इसका एक्सपेंड कर लो.
this will become, next step will be RMS square equal to 1 by t integral of 0 to t a square b square sine square omega t plus pi by 3. Next 2ab dt. दिस यू इंटीग्रेट, साइन स्क्वायर अगेन आपको इंटीग्रेट करना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इंटीग्रेट सॉल्व इट. आप जब सिंप्लीफाई करेंगे द फॉर्मूला विल एंड अप दिस मच. ओके फाइन. और नहीं तो एसी सर्किट जो हमारा चैनल है उसके यहाँ पे श्रीधर सर फिजिक्स या फिजिक्स न्यूमेरिकल जेई, वहाँ पे हाउ टू simplify this equation I have shown the proof. Just refer that. There's an end formula. Please do remember. This is called like a DC component. This is called like a AC component. Fine. इसका phase angle, okay, fine. या pi by 6 या pi by 4, pi by 3, 30 degree, 60 degree, कुछ भी रहने दो, ये फर्क नहीं पड़ता है. This formula will just, it will be this much only. Okay, next we'll take the another question. In an AC circuit, in an AC circuit, the instantaneous current is zero when instantaneous voltage is maximum. In this case, the source may be connected to. Instant current is zero when the instantaneous voltage is maximum. Current leads the voltage across the inductor. Means इसका क्या मतलब है? ऐसा like if you draw the, when current voltage is maximum, voltage का curve will be dependent on cos. Current का जो curve है, so this will be dependent on sine. This will be voltage. Okay, fine. तो ये जो रिलेशनशिप है दिस वन, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम प्लॉट करें करंट और वोल्टेज का. So it happens like across inductor, current leads the current lags the voltage, or voltage leads the current. This when you connect inductor across pure AC source, this is what happens. Agreed. So this now pure inductor possible. Pure capacitor, when the incident voltage is maximum across capacitor, ये जो diagrams है my across pure capacitor check कर लेंगे एक बार. Across pure capacitor, current will lag the voltage. Current will lead the voltage. When the instant voltage is maximum, in this case, the source may be connected to. और यहाँ पे ले लो तुम. When voltage is maximum, current will be zero. Then I'll plot graph for this. इसको हम plot करेंगे. When current is maximum, यहाँ पे आपको voltage will be zero. Voltage का कर्व इस तरह से आता है. तो ये हो गया आपका करंट, ये हो गया आपका वोल्टेज. तो यहाँ पे भी जब वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट विल बी जीरो. नो, दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ये जो करंट का ग्राफ है, यहाँ पे लुक अक्रॉस कैपेसिटर भी
जब voltage maximum है, so what is the current? Current will be zero. I think this condition is satisfied even for pure capacitor circuit. It's satisfied for pure inductor circuit. मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ. दिस इज प्योर इंडक्टर. दिस इज फॉर प्योर कैपेसिटर. And it can happen for combination of pure inductor and capacitor also. दोनों दोनों सीरीज में लगा देंगे. दोनों को सीरीज में लगा देंगे. इंडक्टर कैपेसिटर. यहाँ पे XC XL कौन सा भी ज्यादा रहने दो. If XL greater than XC, the net will become inductance. Then it will behave like this. The circuit will be like this. If XC greater than XL, the circuit will be like this. I think still satisfied. No? So we'll pick up this option. So what about resistor? Across resistor, current and voltage will be in phase. When voltage maximum, current will be maximum. When voltage zero, current will be zero. This जो resistor will happen like this. Resistor, this is VRMS. This happens across resistor. See, there's a basic concept. बिना बिना कॉन्सेप्ट पढ़े चुप के आके ओ ये क्वेश्चन लेके टाइम बर्बाद मत करो. जाके पहले पढ़ो the theory concepts, have a concept clarity, then come back, think on the problems, use the formulas. Definitely you can manage exam. Exam is a test of knowledge. Using, you have to learn. पढ़ के एग्जाम तैयारी करना है. बिना बिना तैयारी करके अगर आप एग्जाम लिख रहे बोलते नो यूज. तो पहले पढ़ो ठीक से. एक 30%, 50, 60% सिलेबस पढ़ो. उसका फॉर्मूला जो भी याद कर लो. Then come and solve the previous means. Very easy. Okay, this, yeah, total, this is the April shift we have completed. Okay, fine. Next video, I'll upload the January shift. Okay, kids, thank you very much. Please do subscribe. Please do subscribe, share our channel. It's a very small channel where we are growing because of your help. बाकी सभी वीडियोस लाइक हर एक चैप्टर का मैं हिंदी में अपलोड कर रहा हूँ मेंस का. मेक यूज ऑफ इट. ओके किड्स, ऑल द बेस्ट. डू वेल, प्रिपेयर वेल, रिवाइज ऑल फॉर्मुलास, रीड कॉन्सेप्ट्स. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. टेक केयर.